Pre-romantic romantic period. The romantic period has historical contrast. Industrial Revolution, French Revolution, ideal features emotion over nature or sleep, imagination, individualism. Major poet, first generation William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, lyrical ballads of the second generation Lord Byron, Percy Bysshe Shelley, John Keats, novelist Jane Austen, Pride and Prejudice, Sir Walter Scott, historical novel. The Victorian period, historical context, reign of Queen Victoria. Victorian period, reign of Queen Victoria, empire expansion and industrialization themes, morality, social criticism, realism. Major novelist Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy. Major novelist Victorian period, Charles Dickens, George Eliot, Thomas Hardy. Novelist थे चार्ल्स डिकेंस, जॉर्ज एलियट, थॉमस हार्डी. Poets थे अल्फ्रेड टेनिसन, रॉबर्ट ब्राउनिंग, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, मैथ्यू अर्नोल्ड. लेट विक्टोरियन कौन से थे? ऑस्कर वाइल्ड, द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे. मॉडर्न पीरियड 1945. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वर्ल्ड वॉर्स, रैपिड इंडस्ट्रियल एंड सोशल चेंजेस. Features का experimentation, system of consciousness, fragmentation, symbolism. राइटर को नॉलेज जेम्स जॉयस, जिसने लिखा था यूलिसिस. जेम्स जॉयस, यूलिसिस. वर्जीनिया उल्फ, डी.एस. लॉरेंस, एम फॉस्टर. पोएट्स टी.एस. एलियट ने लिखा था द वेस्टलैंड. W.B. Yeats ने लिखा इजरा पाउंड. ये मॉडर्न पीरियड के थे. ड्रामाटिस्ट जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. ओनली वन ड्रामाटिस्ट थे, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ. पोस्ट मॉडर्न पीरियड 1945 प्रेजेंट. फीचर्स आयरनी, मेटाफिक्शन, मैजिकल रियलिज्म, क्वेश्चनिंग, ग्रैंड नैरेटिव. राइटर्स कौन थे? नॉवेलिस्ट कौन थे? सलमान रुश्दी. मिडनाइट चिल्ड्रन किसने लिखा? सलमान रुश्दी. मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रुश्दी. एन एम सी इवान सिगुरो. पोएट्स कौन थे? टेड ह्यूजेस, सीमस हैने. ड्रामा सैमुअल बेकेट, नॉवल प्रिंटर. इजिप्ट टाइमलाइन क्या है? ओल्ड, मिडिल, रेनेसां, न्यू क्लासिकल, रोमांटिक, विक्टोरियन, मॉडर्न. ओल्ड मैन रेयरली नैप, रेस्टिंग वेरी मच प्लीज्ड. ओल्ड मैन रेयरली नैप, resting very much pleased. Old means old. Middle, rarely Renaissance. Nap, neoclassical. Resting, romantic. Victorian, very. Modern, much. And postmodern, pleased. History of English literature. Which of the following is considered the greatest epic of the Old English period? Greatest epic Old English period का कौन सा था? Beowulf. Geoffrey Chaucer's the contemporary tales belong to which literary period? Middle English. Geoffrey Chaucer's किसे
रिलेट करते थे मिडिल इंग्लिश से। उनका कौन सा था? दैट कंटेम्परेरी टेल्स। हु अमंग द फॉलोइंग नोन एज फादर ऑफ इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री? चौसर। Geoffrey Chaucer is the father of English poetry. The Elizabethan is part of which large literary period? एलिजाबेथन एज किस लिटरेरी पीरियड से कनेक्टेड है? ये रिलेटेड है तो रेनेसा। पैराडाइज लॉस्ट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन विच ईयर? 1667। 1667 सही है। द टर्म ऑगस्टन इज रेफर्स टू विच पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर? ऑगस्टन पेज 1750 1700 टू 1750 1700 टू 1750 से रिलेटेड कौन सा है? ऑगस्टन एज। विच पोएट्स आर एसोसिएटेड विद द ग्रेवयार्ड स्कूल? कौन से पोएट ग्रेवयार्ड स्कूल से एसोसिएटेड हैं? तो थॉमस ग्रे एंड एडवर्ड यंग। थॉमस ग्रे, एडवर्ड यंग। लिरिकल बैलड्स 1798 मार्क द बिगनिंग ऑफ विच मूवमेंट? रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक। Which novelist is known for social criticism in the Victorian era? विक्टोरियन एरा में किस नॉवलिस्ट को सोशल क्रिटिसिज्म से जाना जाता है? चार्ल्स डिकेंस। चार्ल्स डिकेंस is known for social criticism in the Victorian era. The phrase stream of consciousness is associated with which literary period? Stream of consciousness is associated with which literary period? Modern. Stream of consciousness is associated with modern period. Who is the author of Ulysses? Ulysses का कौन था? अभी तो पढ़ा था। जॉयस। कौन सा जॉयस? जेम्स जॉयस। Which work is considered a prime example of postmodern literature? कौन सा वर्क प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर है? मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रंस इज कंसिडर्ड अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर। मिडनाइट चिल्ड्रन is considered a prime example of midnight children is considered a prime example of postmodern literature. Midnight Children is considered a prime example of postmodern literature. The comedy of manners was popular in which period? Comedy of manners restoration period में फेमस हुआ, पॉपुलर हुआ। Comedy of manners was popular in which period? The comedy of manners was popular in restoration period. Comedy of manners was popular in restoration period. The Duchess of Malfi is a tragedy by which Jacobean playwright? Duchess of Malfi is a tragedy by which Jacobean playwright? By John Webster. The Duchess of Malfi, John Webster. The Duchess of Malfi, John Webster. Duchess of Malfi, John Webster. The Victorian poet known for In Memoriam AHH is Alfred Tennyson. The Victorian poet known for In Memoriam AHH. In Memoriam AHH is Tennyson. Alfred Tennyson. The romantic poet called the poet of beauty. Poet of beauty से किसको जाना जाता है? जॉन कीट्स. Poet of beauty. Poet of beauty. रोमांटिक पोएट. रोमांटिक वह कौन से पोएट हैं जिसको रोमांटिक पोएट कहा जाता है और वो उन्हें पोएट ऑफ ब्यूटी भी कहा जाता है? तो जॉन कीट्स. जॉन कीट्स. Absalom and Achitophel is a political satire written by John Dryden. Absalom and Achitophel is a political satire written by John Dryden. The term metaphysical poets was popularized by US critic Dr. Samuel Johnson. Metaphysical poets was popularized किसके द्वारा? Metaphysical poets popularized हुआ तो Dr. Samuel Johnson. Which of the following plays is by Samuel Beckett? Waiting for Godot. Elegy written in a country churchyard is a work of which movement? Graveyard School. Elegy written in a country churchyard. Elegy written in a country churchyard is a work of which movement?
The graveyard school. Graveyard school. Elegy written in a country church. Elegy written in a country churchyard is a work of which movement? Graveyard school. Elegy written in a country churchyard is a work of which movement? Graveyard school. Find out the word which is correctly spelled invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-B-R-A-T. Invertebrate. I-N-V-E-R-T-E-V-R-A-T-E. Invertebrate. ऑमलेट. ऑमलेट की स्पेलिंग क्या करेक्ट होगी? तो OMELE ऑमलेट. OMELETTE omelette. OMELETTE. cuisine. CUISINE. डायरिया. डायरिया की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है? DIARRHOEA. डायोरिया. Though had a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. The above lines are written for. Though had a voice whose sound was like the sea, pure as the naked heavens, majestic, free. The above lines are written for John Milton. Choose one word from the option which describe the phrase most of. Murder of a brother. Fratricide. मर्डर ऑफ अ ब्रदर, इसको वन वर्ड में क्या कहेंगे? फ्रैट्रिसाइड. फ्रैट्रिसाइड. अब पैट्रिसाइड किसको कहते हैं? द मर्डर ऑफ फादर. मर्डर ऑफ फादर किसको कहेंगे? पैट्रिसाइड को. मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ ब्रदर. मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड. फ्रैट्री. मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ ब्रदर फ्रैट्रिसाइड. मर्डर ऑफ फादर पैट्रिसाइड. The act of killing one's own sister. The act of killing one's own sister is called sororicide. Sororicide. Who refers William Wordsworth as an ever-enduring man? Who refers William Wordsworth as an ever-enduring man? Coleridge. Mark the part with the correct. Mark the part with the error. Rhyme scheme of Petrarch and sonnet. ABB ABBCD CD. शेक्सपियर का क्या है? लामे जी आएगा. ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट नरेशन टू इंटरेक्ट. राम सेड हाउ लवली दिस फ्लावर इज. राम एक्सप्लेन्ड विद जॉय दैट. Ram explained with joy that was a lovely flower.